Clear. A big hello to all our viewers from Let Oorja Talk in association with National Network. And today we are privileged to have some fabulously talented women here on our show. And we are going to host Women's Conference and touching base with the positioning of the modern women and how equipped she is. And today we have some esteemed guests on our show who would be giving insights about what the position of a modern woman is. And let me tell you, when we talk about women, fantabulously talented women, these women have been professionally so successful, and yet they had the audacity to steer their route, to change their gear, adjust their rear view mirror, and then they have looked life into a brand new light and moved ahead and the way they wanted, listening to the passion within, listening to the voice inside. And here we have with us four esteemed guests, four fantabulously talented women. And let me introduce each one of you to our loyal guests, loyal viewers who have been with us all through the show and have been supporting us relentlessly. And today, as we move ahead, the first guest on our show is the Reverend Naina Pandita. Naina ji is someone I have known personally, and with that vibrant smile on her face, she can lit up any room with which is complete darkness. And Naina, you must be there, and we don't need lights at all. बिजली का खर्चा बहुत बढ़ जाता है, मतलब हल्का हो जाता है. So Naina ji is a retired senior technical director at the National Informatics Center, New Delhi, stands as a distinguished professional. Her global representation at the Rockefeller Foundation 2008 conference marked a significant milestone, and in 2022, she secured the Mrs. Category Platinum class title in Swag Icon of India's season 1. And when we talk about Swag Icon of India, I'm sure it suits her so very well. I welcome Naina ji on our show wholeheartedly with open arms and a lot of views, a lot of ideas to be shared. Thank you so much, Naina ji, for being here on the show with us. Thank you, And Nidhi. moving ahead with our next guest, we have Praveen Singh. Praveen Singh is a seasoned certified life coach and IT professional, brings over 25 years. I beg your pardon, did I say 25 years? You look 25 years yourself. And 25 years of diverse experience from top tier MNCs in Citicorp and Oracle, coupled with a master's from BITS Pilani. Beyond her corporate success, Praveen is a versatile individual making notable contributions as an author, mentor, life transformation coach, inspirational speaker, social influencer, and devoted global volunteer. Now, that is some introduction. This is actually, hats off to all you ladies for being so diversified in your field, and kudos to all of you. And now we have the charming and loaded with the charisma, Geetika Goyal. Geetika Goyal is an alumnus of IIT Roorkee and an ICF credentialized corporate team coach with a twist of art and theater, wears many hats with ease. And she is a published author of 7 books, an exhibiting painter for last 22 years, a theater artist, and holds 20 plus years experience in the field of mentoring and coaching. And this is a very prestigious moment for each one of us, watching you and learning to so much more about you. And we have another guest joining in, and that is सुनीता छाबड़ा जी. बट कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे सुनीता जी के साथ कनेक्शन में, बट आई एम श्योर वो किसी 2 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे हमारे साथ. सुनीता जी इज seasoned artist, I must say, and she is an author. She is a writer and expresses so beautifully in Hindi. And she has written bhajans. Her books have been published, and she also works in web series.
Now that is some, like, we have women from all walks of life and doing so many, working so hard in all diversified fields. And when you say modern woman, so who is a modern woman? I see four icons of modern woman here, and each great in their own individuality. I welcome you all again once more on this beautiful platform, Let Oorja Talk, in association with National Network. So, if I would ask you, ladies, who is a modern woman? So, Naina ji, this question I direct to each one of you, and you come, you stand first in the line. So, what, according to you, is a modern woman? Nidhi, a modern woman is somebody who stands out, doesn't she follows traditions, but she still has her own identity. She Identity. respects a culture, she respects the tradition, but she has Wow. her own identity to stand apart. Like I maybe in 1980 or 1990, this concept may have not been there, modern women, but it's definitely Mm. caught up in the late 90s, where women following tradition, the culture, have stood out from the crowd and are determined to prove to themselves that yes, we are individual and we respect the culture of our country, respect the traditions of our country. Wow. Don't mistake us to be somebody who's betraying anybody or our culture or traditions or the society. Absolutely. They just Absolutely. stand out. They just stand out, you can say, from the crowd. That's my Great. take on That is for you and for each one of us. Modern woman is the definition. And moving on to Praveen Singh, we would like to hear from you. Who is a modern woman according to you? A woman who can follow her passion and inspire Ah, others. of course. Okay, according to me, that is a woman who can, first try to be self aware about herself, try Herself. to achieve that, get an internal transformation done, and then inspire others. Okay. Lovely, lovely. Absolutely wonderful. Gitika, what is your point of view on this? See, being modern doesn't mean to dress up like a modern woman or, to behave like a modern woman. I mean, Modern woman. there could be so many definitions attached to that typically. But I feel a modern woman is someone who listens to her heart, who Ah, knows what she wants. She understands hmm. what she wants. She understands her own identity, her own self, and can speak up for that. वंडरफुल दैट इज सुनीता जी बहुत देर से आप कनेक्शन के साथ जूझ रही थी बट यही तो एक मॉडर्न वुमन की खासियत है कि वो बहुत जुझारू होती है और चाहे कितना भी उसको आप लेट डाउन करो खींचो नीचे की तरफ लेकिन वो ऊपर उभर के आ ही जाती है तो और सुनीता जी ने उस कनेक्शन को छोड़ा नहीं और उसको पकड़ के रखा और अब हम जानना चाहेंगे सुनीता जी आप क्या समझती हैं कि मॉडर्न वुमन कौन है देखो आमतौर पे जो लोग हैं ना वो मॉडर्न वुमन को समझते हैं छोटे कपड़े पहनने वाली बिकनी में चलने वाली लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ मैं सोचती हूँ मॉडर्न वुमन वो है जो जी अपने विचारों को सकारात्मक रखती है वाह जैसे बहुत में बढ़िया हो या किसी में हो उसके विचार हैं वो सकारात्मक होने चाहिए उनके साथ चलते हुए वो समाज को और अपने घर को और देश को आगे ले जा सकती हैं बिल्कुल इसमें आपका परिधान कोई मायने नहीं रखता लोग ये सोचते हैं कि मॉडर्न वुमन सिर्फ वही होती है हाँ बहुत बढ़िया और अब एक अगर हमें क्वेश्चन देश को आगे हाँ जी हाँ जी देश को आगे बढ़ाना है तो हमें स्त्रियों को नारियों को आगे बढ़ाना होगा उन्हें पढ़ने के लिए भेजना होगा और एक माँ ही नारी ही है क्योंकि कहा जाता है कि पहली टीचर जो होती है अध्यापिका माँ ही होती है चाहे अपने बच्चों को आगे पढ़ाए उनको आगे बढ़ाए जब एक घर सुधरेगा तो धीरे धीरे समाज सुधरेगा तभी हमारा देश भी सुधर जाएगा बहुत खूब बहुत ही उम्दा बात कही आपने और few questions like we have all modern women here sitting with us and we have few questions with you and I would like to tell my viewers that जो हमारा ये forum है it's an interactive forum so if you have any questions you can direct it to any of our esteemed guests and we are here to answer you for sure
And there are so many things we need to discuss. And the first question, Naina ji, I would like to put it across to you that how are modern women breaking the glass ceiling by succeeding in business and work? So, if there is anything that you would like to say on this. Yes, Nidhi, let me be very honest with you with one thing. Yesterday, I did a lot of homework, lot of research work. I have Yeah. never come prepared, and this is the first time I came prepared. And Okay. very quickly for me, why are we succeeding? Why are the modern women succeeding is because they are being more empowered More and they important. are determined to succeed no matter what, right? Plus, the rat race makes them, you know, push themselves beyond their limits. They're determined. They Hmm. know there's a rat race happening. और उस rat race Happening. के लिए succeed होने के लिए they are determined. They have set goals कि we have to achieve this, we have to do this, and they have Hmm. challenges. Yes, they will face a lot of challenges, No but challenges. and they also are facing failures. It's not only about success; it's about failures Success. also. But they've Hmm. realized from these failures, they will learn more, they'll correct their mistakes, and their failures become stepping stones to their success. So Stepping stone. Absolutely. that's So my that's that's my a that's my That's take on it. wonderfully put up. And because until we face the failures, we would not be able to taste the sweet, जो success का जो taste है, वो हमें समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल. Absolutely fantastic answer. And moving on to now, Gitika. And Gitika, here we would like to ask you the question like to you is how can women balance professional success with personal life in today's fast-paced world? Earlier on we used to have joint families and everyone pitching into it, and now we are into nuclear families where the entire burden, the onus is on the mother most of the times. So how does she balance both the professional and personal life with Ilan? Sure. See, what I feel is the very first thing is managing everything in a very systematic way. This Way. management is very, very important. Prioritization of things is very important. When I say prioritization, see, as mothers or as the lady of the house, most of the time we prioritize our own things. We don't do that very well. For Very us, well. Hmm. family, kids, other things always have the top priority. But Priority. Yeah. yeah, but when we are talking about being empowered or being positioned in the way that we should be, in that Hmm. case, prioritizing our own things, our own interests, our own passion, our own work, our own Work. profession, all those things are also very very important. तो वो Important. हमें करने की जरूरत है. उसके अलावा many a times we feel कि सब कुछ हमको ही करना चाहिए. It is on Hmm. us and we should do it. Hmm. It is Ah. definitely not necessary. We can definitely delegate work. Delegate. Yeah. Absolutely. So delegation is something which is very important. Otherwise, if we feel Important. I am the best person to do it, if I am Hmm. not there, everything is going to collapse. That is not the case. So let That us, is not there. yeah, let us, accept it. We might feel Hmm. good about कि अच्छा हमसे ही सब कुछ चलता है, but that चलता is है not. वो भी गलत है. नॉट It ट्रू. एब्सोल्युटली. that डेलीगेशन जो है, मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जो हम परफेक्शन की बात करते हैं, जो हमें हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें छोड़ के चलना चाहिए कि Right. परफेक्शन आपकी कोई चीज ऐसे नहीं है. और exactly. डेलीगेशन आपने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि हम लेडीज कई बार ये हमारे अंदर ईगो आ जाती है, चाहे वो बहुत सबड्यूड हो, वेल्ड वे में हो कि हमारे बिना तो काम चल ही नहीं सकता. बट डेलीगेशन हमें भी सीखना चाहिए कि किस तरह से डेलीगेट करके हम अपनी और दूसरों की लाइफ भी बहुत स्मूथ कर सकते हैं. बिल्कुल, बहुत ही सुंदर Absolutely. आपने जवाब दिया. बिल्कुल. और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं. And we have Vaishali say, and he says, gives us a thumbs up. And we have Roma ji also joining us, and she says, congratulations, Naina. Bhavna Gupta joining in. And Vaishali say, he's saying that in modern women's life, what is difference between equality and empowerment? So, Praveen ji, how would you answer that question? See, whenever we are talking about this empowerment, right, it is very Mhm. subjective. Okay. If we consider the modern areas or cities or towns, for us, empowerment is going beyond our
work and like the personal life. But when it Hmm. comes to rural areas, right, even allowing them to study is kind of an empowerment, right? Empowerment. Yeah. So yeah, so it is very subjective. And when we are talking about equality, what we are saying is we do not want something to be subdued in our life. We do In our not life. want any kind of a gender bias. Whatever Hmm. are, the traditional things which men are considered, capable of doing, I think even women nowadays, with being the generation Z, that is what we call Hmm. ourselves, For are ourselves. stepping in, and they're breaking those norms and trying to get into that area. So for me, it's equality is not just trying to fight and trying to get equal Right. Exactly. opportunities. Hmm. It is also stepping up and giving opportunities to the women to Women. prove themselves. So So in I think fact, that it's not yes, about giving opportunities. If it's not always about giving, it's also about asking. It's asking. also about Absolutely. believing that you deserve it. So unless we Yeah. start asking, it becomes very tough to receive it. Absolutely, because sometimes you need to voice your concerns, voice what you want. Because until you voice it, I mean, people wouldn't know कि अरे आप ये कर सकती थी. तो आप अगर आपके अंदर है तो आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा. और आपको अपने अंदर जब तक यहाँ अंदर बिलीफ नहीं है कि आप कर सकती हैं, तो और वो वॉइस नहीं आप बताएंगी लोगों को कि आप कर सकती हैं. So some people they say it कि नहीं ये तो blowing your own trumpet. It is not about that. It's about knowing yourself, realizing what your self worth is. Realizing that latent talent within. अब latent talent की जब हम बात करते हैं, सुनीता जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो भी आप वेब सीरीज में काम कर रही है, वो आपकी जैसे जिस एज में, मैं यहाँ एज मेंशन नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जिस पड़ाव में आप हैं, और आपने जब वेब सीरीज के बारे में अपनी फैमिली से कहा कि आपको वेब सीरीज में एक रोल मिला है करने के लिए, और आप इस तरह से आप मॉडलिंग भी करती हैं, प्रैंक वॉक भी करती हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है कि इंडियन वुमेन के लिए कहते हैं कि बहुत सारे टैबूज होते हैं, और उन टैबूज को तोड़ के आगे निकलना बहुत बड़ी अपने आप में एक बात होती है. और जब आप वेब सीरीज वगैरह में इस तरह से सोशल मीडिया पे जो इतना बड़ा एक्सपोजर देता है, तो आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी, ये मैं जानना चाहूंगी जरूर. देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव सबकी फैमिलीज में होता है. होते कुछ हाँ हैं में जी. होता है, कुछ ना में होता है. लेकिन ज्यादातर मुझे सपोर्ट किया गया. 2005 में भी मेरे पास आई थी, तब मेरे बच्चे जी जी. छोटे थे, तब मुझे अपनी फैमिली की प्रायोरिटी लगी थी, तो मैंने नहीं हम्म. किया था. अब मेरे बच्चे सेटल हो गए थे और मैंने किया. मुझे सबने खुद ही कहा था कि जो काम आपने अपने अधूरे छोड़ दिए थे, आप अपने वो सपनों को पूरे वहीं करना. पूरा करिए. पूरा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. हाँ, मेरे बच्चों ने मुझे पूरा सपोर्ट करा. और वैसे भी मैं एक गाना रोज सुनती हूँ, गीता दत्त जी का. ये गाना मुझे शुरू से बहुत पसंद है. पसंद. जी जी. तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले. तो मैं सुनीता जी मेरे ऐसे मजा नहीं आ रहा, सुनीता जी ऐसे मजा नहीं आ रहा, गुनगुना के बताइए हमें. बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले. मैंने 2022 से काव्य मंच प्रारंभ किए थे लता जी की डेथ के 1 महीने के बाद से. तब से जी जी. लगातार मुझे मिलते गए और अपॉर्चुनिटियां मुझे सिंगिंग में भी मिली. मैंने सिंगिंग भी स्टेज पे करी है, मैंने एक्टिंग भी करी है, काव्य पाठ भी करती हूँ, ऑनलाइन काव्य पाठ भी करती हूँ. और मेरी काफी सारी बुक्स में मेरी कविताएं छपी हैं. ऑस्ट्रेलिया की बुक में भी मेरी कविता को सम्मान मिला है. और बहुत अभी बढ़िया, मेरी बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा. और मेरी एक बुक लॉन्च हुई है अभी, भावनाओं के बादल, अमेज़न पर है. जी जी. उसमें मैंने अपनी, और मैं बहुत सरल भाषा में और छोटी कविताएं लिखती हूँ. मैं किसी बंधन में नहीं बंध के लिखती हूँ. मैं पक्षियों पे भी लिखती हूँ, बेटी पे भी लिखती हूँ, पिता पे भी, माता पे भी, हस्बैंड पे भी. Thank you तो so much, जो Sunita ji. That is so wonderful to know so much
talent जो आपके अंदर कूट कूट के भरा है. Naina ji, there's this question coming up for you. Where do you think India is rising, and what will be the contribution of women or girls in that? Geetika ji, this question is directed towards you. So if you could just answer this for us. एक बार और Of course. Where do you all think India is rising, and what will be the contribution of women or girls in that? see, I cannot answer this based on the data, but I can answer is as per my knowledge and my understanding of life. So there is a lot of development India is seeing, and Mm-hmm. definitely, if I talk about technical institutions, for instance, there Mm-hmm. has been a set percentage which has been defined कि इतनी percent female candidates or इतनी percent girls should be admitted, should be Admitted. taken into various courses. So I think lots of efforts around that are being made, and that is improving, if I say so, the ratio of the two genders that are Genders. entering into different fields. These days girls are holding very senior positions, very senior roles. They are very open to network. They are speaking Network. their voices out. They are creating communities to reach out to people. So there is a lot happening in India as well. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एक्सपोजर मिला है आजकल, दिस जनरेशन, द काइंड ऑफ एक्सपोजर they have, they are passing on to us also in some way or the other. Because Absolutely. I feel that I feel empowered looking at the younger generation, and I learn a lot from them. Lot So from them. All of yeah, us. yeah, I so I think that think there is is a lot women are contributing, girls are contributing to the development of India right now. so. Nidhi ji, Moving I on just to Praveen Singh. and I cannot Yes, just yes, add Naina ji. this women contribution I think has been there, if just not if in the urban areas, but in the non-urban rural areas also. Rural areas as Women, well. Yeah. I mean the farmers' wives are putting in a lot of effort. That green Effort. revolution did not just happen because of the farmers, it happened because they had their wives to support them. Their wives Support were them. also Absolutely. खेतों में काम कर रहे थे. So the green Uh, revolution credit should not be just given to the men. It was women also who contributed to that women success of also. that revolution at that time. And now also the rural women are very tech savvy. I mean, I remember seeing one like मजदूर की wife थी and construction काम जी चल जी. रहा था. And I was just going down the road. It was early morning, and she's talking to somebody on the phone. तो मैंने कहा किससे Uh-huh. बात करो? WhatsApp वीडियो चैट कर रही थी जब मेरे पास WhatsApp ही नहीं था. तो मेरे से I think Uh-huh. she was 10 steps ahead of me. So even women in the cities, but in the villages, in rural areas, Villages as well. are also बिल्कुल. contributing to the success or to the fast forward movement that is happening in the country. That's what I feel. Absolutely. The role of women, if you see, अगर हम ये देखें, अगर जैसे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, more than 50% of Indian population consists of women. एंड अगर हम जो women है, हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है, अगर हम उनको एक थोड़ा सा भी मालिकाना हक दे देते हैं किसी चीज का, या उनको बोलते हैं कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो बाहर निकाल के आओ, ऐसी कोई वुमेन नहीं है जो कि जिसमें कोई टैलेंट ना हो और अपने घर में बैठ के वो काम नहीं कर सकती. बस उसको एक नड्ज चाहिए, कई बार उसको एक पुश चाहिए, उसको थोड़ा सा कहीं सपोर्ट मिल जाए. तो ऐसी कोई भी नहीं है जो घर में खाली बैठ के खुश है या राजी है. एंड इस चीज को हमें समझना पड़ेगा. एंड बहुत सारी ऐसी चीजें कि केवल हम रूरल वुमेन को हम देख रहे हैं. Abhi, the credit of Chandrayaan and Mars mission is to all the women, including leader and motivators like you all. Absolutely, जो women support में जो खड़े होते हैं या women जो चीज आगे लेकर जा रही है, जैसे अब ये बता रहे हैं कि चंद्रयान एंड मार्स मिशन, ऑफ कोर्स women के बिना आप देखें कोई भी ऐसा कार्य जो अधूरा ही है, कोई भी पूरा नहीं हुआ है. और अगर मैं ये बोलूँ को what is the role of mentorship programs, what does the role of mentorship programs play in empowering women professionally? Praveen ji, आप इसका जवाब कैसे देंगी? The role of mentorship programs play in empowering women. So how would you answer that? Yeah.
See, mentor is a person who will not tell you what to do. He's a What to do? person who will ask you what your dreams are and will Okay. make you work on it and come up What with to do? whatever are your choices or what you have Mm. to do. So on a professional front, I think it's very, very important. A lot of us women try to hesitate, like as soon, I mean, if you look at like freshers joining the companies, the MNCs, they try to hesitate a little bit in approaching mentors. Okay, but what I have Mm. seen is wherever they have tried to take that small initiative, there are Mm. quite a lot of programs that MNCs run Right. for Mm. mentorship and coaching. Each company has its own way of tackling such things. But जब आपके पास एक mentor है Mentor who है. is ready to share their journey within the Mm. company, who is there to help you out, understand, giving you clarity, and also Clarity. help you out communicate it with your managerial hierarchy or your Mm. management. Mm. Your dreams achievement rate, like it kinds of Increase. exponentially speeds up. तो Mm. इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में एक मेंटर या एक कोच का, एंड होना स्पेशली चाहिए. वर्क फ्रंट पे तो बहुत ही ज़रूरी होता है. एंड इट्स अ Mm. वेरी गुड प्लेटफॉर्म इफ योर कंपनी इज ऑफरिंग इट. इट्स ऑलवेज गुड दैट यू रीच Good. आउट, हैव समवन. अब जैसे आपने बताया था निधि जी Mm. मतलब there's just that small nudge, right? Mm. So the reason a mentor or a coach or like-minded environment is there is Mm. because that nudge is required. Required. When we are trying Absolutely. to give up, right? Because of Mm. various personal, professional, जो भी हमारे drawbacks होते हैं, Drawback. situational होते Mm. हैं, all those things, वो एक nudge काफी होता है. काफी एक होता है. भरोसा जी. देने वाला काफी होता है कि no, जी no, जी. you have come You this can do far. it. Mm. Don't give up now. So Wonderful, this is wonderful. There's important. another question coming up, and one more question, ma'am. What can a homemaker woman do for being a modern woman in a hectic schedule? And how they can create their own society where they can raise their voice and create their space? And who would like to answer that question for us? I think all of And us can answer that. Yeah. We are also homemakers as well as, I mean, see, working doesn't mean that you're not the homemaker. You're also a Hmm. homemaker throughout your Homemaker. life because you're Hmm. the one who is making this environment at home, right? So Geetika ji, here, हमारे इंडिया में थोड़ा एक डिफरेंशिएशन है. इफ यू आर वर्किंग, आप बाहर काम कर रहे हैं तो आप होम मेकर नहीं हैं, आप बाहर काम कर रहे हैं. आप घर में हैं और घर में भी अगर आप काम कर रहे हैं, घर में भी अगर आप समझ एक होम शेफ हैं या कुछ हैं, आप फिर भी एक होम मेकर ही हैं, क्योंकि आप घर से बाहर जाकर काम नहीं कर रहे. तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट सा हो गया, बाहर जाके काम करना इस काम. आप घर में चाहे आप कितना ही कुछ कर लें, वो आप फिर भी एक होम मेकर ही है. तो ये जो correct. माइंडसेट है कहीं ना कहीं हमें इसको चेंज करना हाँ, होगा. करेक्ट. ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये ही हम्म, चेंज करने की जरूरत है. मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कब और कैसे होगा, बट होगा. अगर आप मुझसे पूछें तो एक होम मेकर के पास वो सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. मैं ऐसा नहीं हाँ, कहती क्योंकि हर एक की परिस्थितियां अलग होती हैं, अलग लेकिन होती आपके है. पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी बात कह पाएं. अनलेस यू जी. से व्हाट यू नीड, हम्म, and nothing is going to fall into place. Because see, with my experience, if I tell you very quickly, Nidhi, when my हम्म, kids were young, I made it a point to let them know that this is my time, this is हम्म, my work, and this is my हम्म. priority. So Priority. if हाँ. I have to do it, I will do it. You हम्म, adjust according to that. And no, as a result, it so happened that they used to, they understood कि ये मम्मा का टाइम है, ये जरूरी है. So जरूरी है बिल्कुल. yeah, so I think as a homemaker also, सबके schedules बहुत hectic होते हैं, but होते हैं. prioritizing and listening to your heart and voicing out is something which is needed. हम्म. Let me Absolutely just true. add, We have Nidhi, like you yes. said, इंडिया में हाउसवाइफ को लगता है कि कुछ काम नहीं करती. दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. आई थिंक हाउस वाइफ सबसे ज्यादा काम करती है घर पे. And शी टेक्स thankless. केयर ऑफ And नॉट जस्ट द thankless. हाउस बट द चिल्ड्रन, एवरीथिंग, राइट फ्रॉम द बिजली का बिल टू द काम वाली बाई, एवरीथिंग शी टेक्स केयर ऑफ. शी डेफिनेटली हैज अ वेरी बिजी स्केड्यूल. बट आजकल की जो होम मेकर्स और हाउसवाइफ्स,
they have technology with them, right? You Technology have with them. Half the you have workload is gone. you have a phone, you have a Mm. smartphone. Use that. Smartphone. When you have a phone like this in your hand, just do go online and find opportunities online. Online. form Absolutely. form a group Absolutely. on WhatsApp with like-minded people, like-minded women, and start a club on Absolutely. WhatsApp. I mean, jo ladies Absolutely, we can find so many opportunities. Yeah, this phone in our hand, the gadget in our hand, gives us so many opportunities, and we can explore ourselves, learn so much new, learn new skills, gain so much more knowledge and everything. We have this question coming up, and which is directed to each one of you, anyone who wants to attempt. With Rama ending his exile, lots of people say that we should build hospitals and schools instead of temples. What's your take on that? तो सुनीता जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो ये हमेशा, अभी आप कह रहे थे कि हाउस वाइफ को खुद भी है, चाहे वो बाहर जाके वर्क कर रही है या वो है। और दूसरा ये है कि हम इसके लिए कोई क्लास नहीं दे सकते, क्लासेस नहीं कर सकते। हम पहले 8 अष्टभुजाओं वाली माँ थी जो राक्षसों का वध भी करा, लेकिन आज आपने देखा है 19वीं सदी में नारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आजकल तो मोदी जी ने नारी के लिए बहुत कुछ आगे दिया है, जिससे कि वो अपने पैर लगाकर जल थल वायु और यहाँ तक कि पहाड़ों तक पर नासा तक पहुंच गए। उनके बिना क्यों, उन्होंने इतने पंख लगा लिए। आपने यही कहा कि उनको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो आगे बहुत कुछ कर सकती हैं। पहले सिर्फ अष्टभुजाओं से चल रही थी, अब सहस्त्र भुजाओं लेके चल रही है। अब उस अष्टभुजाओं में एक मोबाइल भी आ गया है, गैजेट्स भी आ गए हैं। लेकिन इसमें आप देखिए ना, जो घर में रहने वाली बाई वगैरह, उन सबको भी इतने अच्छे से चलाना आ गया है, उनकी नॉलेज बड़ी है, वो उस पर भी कई चीजें नॉलेज वाली भी देखती हैं। देखो प्लस, मैंने कहा ना, प्लस माइनस दोनों में ही सभी होता में है। होता है। हाँ एक जी, हम पहली वीरांगना जो थी, भारतीय वीरांगनाएं तो कई सदियों से चलती आ रही हैं। पहली वीरांगना प्रभावती जी थी, आप दुर्गावती जी को देखिए और अंशु को देखिए, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में साम्राज्य संभाले और मुगलों से लड़ाइयां भी करी और विजय भी पाई। तो इसीलिए तो नारी के आगे ही शक्ति लिखा होता है, पुरुष के आगे नहीं। नारी जी जी, शक्ति एक सुनीता जी क्वेश्चन आया है यहाँ पे, दिस इज डायरेक्टेड टू ईच वन ऑफ अस कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी द वे अहेड फॉर मॉडर्न वुमेन? व्हाट डिफरेंस फ्रॉम योर जनरेशन, आपकी और आजकल की जो जनरेशन है उनमें क्या डिफरेंस है, एंड शुड बी द प्रायोरिटी? व्हाट डिफरेंस फ्रॉम योर जनरेशन शुड बी द प्रायोरिटीज? मतलब जो आपके जनरेशन में और अब की जो जनरेशन की मॉडर्न वुमेन है, उनकी प्रायोरिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से उनको टैकल किया जाए? देखो, जिस एज में मैं हूँ, हमने सब कुछ देखा है। हमने जी अपना जी मिट्टी पे खाना बनते भी देखा है, चूल्हे फूंकते हुए भी देखा है। आज जी। की जनरेशन वो नहीं देखा। हमने समय बहुत अच्छा देखा, खुली छतों पे भी सोकर देखा। और correct. आज की जनरेशन ने जो देखा है वो इस हिसाब से आगे बढ़ेगी। और मैं सोचती हूँ आज के बच्चों में नॉलेज बहुत है। पहले हम उनको सिखाते थे, अब वो हमें सिखाते हमें हैं। सिखाते हैं जी। और दूसरा, और हमें भी जैसे उन्होंने हमसे समझा, अब हमारा फर्ज बनता है हम भी उनसे सीखें, हम और वो समझे। सिखाते हैं। और बिल्कुल। मैं खुद अपना कहती हूँ, हमने अपने कभी मम्मी पापा को, अपने सास ससुर को ये नहीं कहा था कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, आप घूमने जाओ। लेकिन आज हर बच्चा अपने मम्मी पापा को यही कहता हुआ दिखाई देता है, अरे मम्मी आपने बहुत कर लिया, हमें पाल लिया ना, अब आप अपनी लाइफ एंजॉय एंजॉय कीजिए। करो, है ना। प्रवीण जी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। प्रवीण जी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि डू यू जी थिंक वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी इज असेंशियल फॉर वुमेन्स प्रोफेशनल ग्रोथ? definitely. Definitely, हाँ flexibility is something that every person is looking at, especially after the COVID phase. Like work Yes. from home का जो concept आया Culture था आया। COVID के time में, that has helped people like take up multiple roles, give At the more same time. time. हाँ, तो अभी का जो generation आप अगर देख रहे हो,
They are Hmm. not looking for huge paychecks. They are Paycheck. looking for other kind of opportunities, or well-being, focus on well-being, or focus on personal time. ये Personal ज्यादा time. importance हो रहा है. So Hmm. flexibility is one thing which all the corporates are focusing on as of now. Uh, Otherwise, they feel that they are going to lose the biggest talent Biggest that's talent. coming Hmm. in. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल का जनरेशन काफी कंसिडर कर रहा है, एंड ऑल्सो कंपनीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू Operating. डायरेक्ट, Hmm. या ऑपरेट इन दोज काइंड ऑफ मोड्स पोस्ट कोविड फेज स्पेशली. अभी एक मैं अभी प्रवीण जी ने कहा है पे चेक के बारे में, तो पे चेक के बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी इक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, नैना जी? पे चेक में तो हाँ इक्वालिटी और तो है ही नहीं बिल्कुल. हम्म. बट ये चीज जो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया फॉर 20+ years, I was fortunate enough where I saw equality in the paycheck. There was no discrepancy. Whether you were, I retired as a senior technical director, and the male counterpart who also was at a senior technical director, we got the same pay. So I was very fortunate not to see that disparity. And I can't comment on the private sector because I have honestly not worked there. Not But worked with them. in the government sector, there is no disparity in the paychecks. There is total equality there. And going back to one earlier, somebody asked, empowerment or equality mein kya hai? I feel that if you're empowered, then only you can fight for your rights. Then only you can Equality. fight for Absolutely. equality rights. If you're not empowered, अगर आप घर में छुप के बैठे हुए हैं और दूर से कहते हैं नहीं जी मेरे को भी ये काम करना है, that काम is करना not. है. You have to be empowered to fight for your rights. Right. We have this question coming up from Bharat TV that if you all say that today's generation is more intelligent, we beg to contradict. Why do we see less examples of today's generation as compared to the Maitris, Gargis, Savitri Bais, and Kiran Bedi? So, who would like to answer that? Gitika ji. See, examples will be created. I mean, aren't we in a hurry to conclude anything here? This generation, कौन सी Yeah. generation की हम बात कर रहे हैं? किरण बेदी was almost our generation, थोड़ा सा बड़ी है हमसे, maybe 10, 20 years, 15 years apart from us. Agar if we are talking about the next generation, if I talk about the kids who are in their 20s or early 30s or something, give them time. They will create history. Yeah. Why Mhm. not? Why? Who are we to judge them right now? Right now. They do things in their own ways. We have to respect their perspective. We have to have Perspective trust as in well. their thought processes, their perspectives, their identities. So unless we do that, we will keep thinking negative only about this generation. But I really feel like everyone out of us believes that this generation is very smart. They are very strong-headed. They know exactly what they want in life. हम लोग What to शायद do? उनके age के थे ना, हम थोड़े फिर Putting भी focus. हम फिर भी we used to carry a lot of baggage, we used to carry a lot of things that conditions, lot very conditioned mind. आजकल conditioning बहुत कम हुई है बच्चों के बहुत अंदर. कम हो रही है. Seeing that with my तो own यहाँ children also. Yeah. एक क्वेश्चन और पॉप अप हुआ है भारत टीवी या हाँ जी. सो दिस इज गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग. व्हाई लेस ऑफ पीपल हु कैन बी रोल मॉडल फॉर टुडेज यूथ? So why are we having less, youth icons today? Sorry, why are we having less youth icons? Like Yes, like why Geetika less of ji, people who can be role model for today's youth? Who can be a role model for today's youth? So why do we have lesser number of people in those bracket? So who would like to answer that? Naina I'll go ji, for Praveen ji? I'll go for this because I feel Okay. you really don't have to go and look for a role model. Look for a role model in your own house. Look at your All mother. right. Honestly, Marilyn, मेरी माँ was an icon for me. जो 1950s में she fought to become a doctor. She put her foot down. She told her father मैंने स्कूल जाना है. 1940s की जाना बात है. है. वो मेरी जी रोल जी. मॉडल, वो मेरी आइकन है. और हाँ. 1950s में डॉक्टर बनना was huge at that It's a time. huge. It Absolutely, I was agree with huge, you and totally. my dad supported her, so he's another role model for me. Look for role models in your own house. Why do you have to look Yeah. for an icon or a role model outside?
आपको कोई ना कोई अपनी नानी में, अपनी दादी में, अपने पेरेंट्स में रोल मॉडल who stood up for डेफिनेटली मिलेगा। themselves, who stood up for their dreams. या निधि रोल जी मॉडल मिलेगा आपको, आइकन्स क्यों नहीं है? इट्स जस्ट दैट वी डोंट गिव देम रिकग्निशन, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। Recognition. हम बट इफ यू घर की ओपन मुर्गी योर दाल आईज, बराबर हम उसको दर्जा देते हैं एक्चुअली, कि उन्हें हाँ, सपोर्ट किया तो फिर ओपन ऐसे योर बड़ा आईज, काम। आपकी आपकी मदर ही आपका रोल मॉडल हो सकती है। आई स्टिल जी रिमेम्बर जी। मेरी मम्मी कितनी डिटर्मिन्ड थी, नैना को पूरा पढ़ाना है। नैना की जब हाँ, तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती, उसकी शादी नहीं होती। शादी नहीं करनी। So she was my pillar. My dad, my parents were my role models always. I always saw my parents as my role model. I didn't have to put them on a pedestal or a stage and say, "Yeah, icons है नहीं." आप True. please give take somebody from your own life. एब्सोल्युटली, हमने ये रोल मॉडल्स हमें अपने अंदर ही ढूंढने पड़ेंगे। कोई जो पेडेस्टल पे माइक लेके बोलता है खाली वो रोल मॉडल हो, वो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उनके वैल्यूज, आप उनकी वेवलेंथ को मैच करते। मे बी फॉर इंस्टेंस आपको कुछ अच्छा लगे उनके बारे में, बट कहाँ तक वो आपके बिल्कुल अंदर भीतर आपको समझ पाते हैं या आपके लिए एक विजनरी बन के आपके लिए सामने आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कौन इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा? प्रवीण जी, आप बताएं। See, why? I mean, from the question, it looks like there is a lot of negative background that they have created for the youth It's icons. just they're just Definitely, making it more debatable. They're just making it no, no, more which debatable. is nice, which is very interesting. But let me tell you, like I am a parenting and teenage coach. Okay, Yes, yes, ma'am. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की सुनते तो हैं, but we do not give them the kind of freedom, Freedom. because हमारा, जैसे गीतिका जी ने कहा था, we carry baggage, right? We are that generation जो मतलब सैंडविच का चीज बना हुआ है. We have elders, then we have the younger We the younger generation as well to generation. cater to. तो कहीं ना कहीं when we are giving them like wings to fly, at the same time हम लोग बहुत apprehensive हो जाते हैं, and we also do not pass on those positive vibrations to them. Vibrations. According to me, yeah, lot of parents who reach out to me who have issues with their teenagers, I see that it's their issue actually. It's not with the kid. So whenever they ask me to coach the teenage child, I say, I think, let's first talk. What is it? There is somewhere or the other, there is that conditioning. There is Conditioning. there are those apprehensions. There are some issues with our own personal life Own that we try life. to push. Yeah, and we become very very careful in letting them go. We are like holding them tight. तो उसके वजह से क्या होता है, हमको बच्चे का हर एक्शन वी फील एज इफ इट्स क्वेश्चनेबल लगता है। बिल्कुल या बिल्कुल। हम अपने अपने प्रेशर, अपने टेंशन उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। कहीं इसीलिए हमें हमारे अंदर भी एक मेंटल ब्लॉक है जो हम जिसकी वजह से हम बच्चों को खुला नहीं छोड़ पा रहे, उनको स्पेस नहीं दे पा रहे कहीं ना कहीं। ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। हाँ, तो ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो वो पूछ रहे हैं ना, लाइक यूथ आइकन्स एंड ऑल दैट, आजकल का अभी जनरेशन जो है, लाइक दे वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, दे डोंट वांट टू सेटल इन वन थिंग। जैसे हमको बोला जाता था, यू आइदर बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, डॉक्टर। राइट? नाउ दे डोंट वांट टू डू दैट। सो हमारा जनरेशन क्या होता है, बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसे सुनीता जी ने भी कहा था, नाउ माय किड्स आर ऑल सेटल्ड। जब तक किड्स सेटल नहीं हो जाते हैं, तब तक वी डू नॉट ट्राई टू लाइक परस्यू आवर ड्रीम्स। तब तक वी आर लाइक एग्जैक्टली। अभी का जो करंट जनरेशन है, दे डोंट वांट टू वेट अंटिल दैट टाइम, दे वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, लेट मी फिगर आउट, डोंट हरी, लाइक मम्मा पापा आई एम फाइन, आई वांट टू फिगर आउट। तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा टू बिकमिंग रोल मॉडल्स, बट जब भी करेंगे, आई फील दे विल डेफिनेटली डू अमेजिंग स्टफ। एब्सोल्युटली। सुनीता जी, यहाँ मैं एक प्रश्न पूछ रही, क्या आर्ट जो है उसको हम एक बदलाव का हम एक वो मान सकते हैं कि आप आर्ट के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, रचनाओं के जरिए एक बदलाव ला सकते हैं समाज में? एक मॉडर्न वुमेन की जो स्थिति है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं उसकी स्थिति में? या कवि की कलम जो है वो सबको बदल देती है। जी, बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। हमारे मम्मी पापा दादी का टाइम वो था जब कहा जाता था
हाय अबला तुम्हारी यही कहानी, आंखों हाँ, में आंचल में दूध और आंखों में पानी। तुम्हें ये पानी। जी। उनको लगता है आज के बच्चे, हम दबे हुए थे, हमारे मम्मी पापा ने कह दिया ये करना है तो हमने करना है, करना हम ही है, आगे बिल्कुल। बढ़ते थे। नहीं और करते अगर थे, बिल्कुल। नहीं करना तो हमने नहीं करना। लेकिन जी आज के जी। बच्चे इतना बदलाव आ चुका है कि वो हाँ, अपने विचार अपने मम्मी पापा के साथ साझा करते हैं। करते हैं, मेरी हाँ। मम्मी हमारी बिल्कुल सहेली की तरह थी, और हम हम्म, उनसे हर बात खुलकर करते थे। और हम 6 बहन भाई थे, उन्होंने सबको पढ़ाया उस टाइम पे भी कि नहीं आप पढ़ो। और आज बच्चे खुद कहते हैं हमने ये बनना है, हमने ये करना है, और वो किसी बिल्कुल। भी में हिचकिचाते नहीं है। और हमारी जनरेशन उनको मना नहीं करती, सपोर्ट करती है। कोट और करते हैं। बदलाव बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। आज आज के बच्चे जो हैं जल पत्रिका बनाकर उस पर लिखने को तैयार बैठे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इतना बड़ा जी। उनमें बदलाव है, वो इस वजह से हाँ, है कि हमने अपने मम्मी पापा से सीख के अपने में बदलाव लाए हम, बदलाव और लाए। हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने जी जी। पहले ही कहा कि सपोर्ट हर एक को जरूरी है, चाहे वो जी बच्चा जी। है, चाहे बड़े लोग हैं। अब हम बुजुर्गों को भी, मैंने एक क्लब बनाना चाहा था कि ओल्ड इज गोल्ड, जिसमें हम्म। जितने भी बुजुर्ग हैं, उनसे उनको जो कुछ आता है वो हम उनसे धरोहर के रूप में सीखें और सीखे। अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि बहुत बच्चे बढ़िया। देखें कि पहले हमारे जीवन में हमारी मम्मियाँ कैसे रहती थी। अब आपने देखा पापड़ पहले घर में बनते थे, तो लिज्जत पापड़ वाली लेडी का एक एग्जाम्पल आप देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस बना लिया उससे। तो काम वही होते हैं, लेकिन उनका रूप बदलता जा रहा है। बटन करते हम हैं, जी जी। मॉडर्न तरीके से करते जा रहे हैं। और आज के बच्चों की जरूरत है, रेडीमेड चीजें क्यों आ रही हैं? पहले हम उपटन घर में बनाते थे, अब रेडीमेड लेते हैं, क्यों? क्योंकि समय का अभाव हो गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उपटन नहीं। बना के बहुत देर तक बैठे, है ना? तो आज समय के मांग को देखते हुए हमारे पास मशीनी युग आ गया है, हर काम हम मशीन से करने लग गए हैं। तो उसमें बदलाव आया है, तो हम लोगों को उस बदलाव को समर्थन करना चाहिए, उनके साथ मिलकर रहना सही है। चाहिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया, वैसे बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन, एक रैपिड फायर क्वेश्चन, एक रैपिड फायर क्वेश्चन आप चारों के लिए। क्विक क्वेश्चन, क्विक आंसर्स, एंड वी हैव मॉडर्न प्रॉब्लम्स एंड मॉडर्न सॉल्यूशंस फॉर देम। तो गीतिका, अगर आपके पास कोई ऐसा मोड़ आता है जीवन में जहां आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, कुछ जो आपको सदियों से करने का मन था और आपको प्लेटर में दिया जा रहा है, लेकिन फैमिली थोड़ा डिसअप्रूव करती है, तो आप क्या करोगे? करना अगर मैं चाहेंगे। अगर मैं बिलीव हाँ, करती आगे हूँ कि ये करिए मेरे कि लिए नहीं आगे अच्छा करिए। है, जी जी। हम्म। अगर मैं हम्म। बिलीव करती हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा है, पहले मेरा कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। देन आई विल जरूरी टॉक है। टू माय फैमिली एंड देन वी हम्म। विल सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू दिस थिंग कि अच्छा बीच का रास्ता निकालते हैं। अगर वो बिल्कुल डिसअप्रूव कर रहे हैं, देन वी हम्म। विल कि हाउ वी कैन डू दैट। बट यस, उस समय मतलब उस मोमेंट पे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में उस मोमेंट में क्या होगा वो बहुत डिपेंड करता है। बट यस, फर्स्ट माय कन्विक्शन इज इम्पोर्टेंट, देन आई विल टॉक टू देम एंड आई मेक देम अंडरस्टैंड। ग्रेट ग्रेट, दिस इज व्हाट अ मॉडर्न वुमन इज। वो अपनी फैमिली वैल्यूज को कैरी फॉरवर्ड करती है, आगे लेकर चलती है, चाहे कितने भी बड़े डिसीजन हो, बट कहीं ना कहीं फैमिली का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। प्रवीण सिंह, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं एक क्वेश्चन, कि अगर आपके पास एक कोई ऑफर आता है जो आप बहुत पैशनेट हैं करने के लिए, लेकिन उसमें पे बिल्कुल बहुत कम है, जो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी पर बहुत कम है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस ऑफर को आप लेंगी? सो आपने कहा पे वर्सेस ऑफर ना, तो हाँ, आई ऑफर बहुत बहुत शानदार ऑफर है, और आपको लगा कि आपको उस ऑफर के लिए इतना पे मिलना चाहिए, लेकिन पे बहुत कम है, पर ऑफर इज इरेजिस्टिबल, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? ऑब्वियसली लाइफ के हर सिचुएशन में ये आएगा, ये मोड आएगा जहाँ पे जी। इट्स मोर अबाउट क्लैरिटी, व्हाट इज इट दैट आई वांट। ओके, हम्म। आई एम वेरी क्लियर कि जो ऑफर दिया गया है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, आई हैव बीन वेटिंग हम्म। फॉर लॉन्ग एंड दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प मी लाइक प्रोग्रेस फर्दर, जो मेरा फर्दर। ड्रीम है टुवर्ड्स दैट। हम्म। देन definitely I will just like
compromise on the pay side. But for me, if it is that, pay is more important, and I'm Important. ऐसे वाले offers मुझे और भी मिल सकते हैं towards my passion, then maybe I'll just say, okay, let me give it a next shot. Just let this Short. go and try it. So, तो so कहीं ना मेरे कहीं लिए कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है, कॉम्प्रोमाइज वाली एक सिचुएशन आती है. देयर इज दिस क्वेश्चन कमिंग अप, डू यू थिंक women should follow business route or job versus business? What is your take on this, Naina ji? And leave it to them, Nidhi. We should leave it to them. If they feel by having a secure and job, they will be Hmm. better off in life, they should choose that. Hmm. But They I should. chose a government job, even though I was working in the British Council, and Hmm. I left when I left, and after I left, the pay jumped some 10 times, but I didn't feel bad because I knew मेरी Hmm. सरकारी job is secure. Correct. Secure. I have a retirement Hmm. plan. I have a retirement plan which will take care Retirement of plan. me in my later years. But अगर उनको लगता है कि the business is what they want, like you have a family business, and if there are very little risks involved in that business, take the business Hmm. route then. Take Take the the business business route. route. Yeah, take If the you're business ready to route. take risk, if you're ready to take risk, why not business? Otherwise, if you have a secured government job, especially, I Yeah. mean, nothing like that. Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल. और सुनीता जी, यहाँ एक प्रश्न आपके लिए, मॉडर्न टाइम्स में, चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है. प्रवीण जी, आपके लिए, ओनली अपॉर्चुनिटीज आर पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एज अ वुमेन. If not, then how responsibility will become part of modern women to make them modern? So this question is directed to you. तो मैं आपके पास सीधा आपको पहुंचा दिया मैंने. तो इसका जवाब okay. आप प्लीज दीजिए. जी. हाँ, तो see, what is the term modern? अगर आप Okay. उसको समझने की कोशिश करें, ओके, इट्स जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अपॉर्चुनिटीज, इट इज अबाउट द थॉट प्रोसेस, जहाँ पे हम अपना पुराना ओल्ड वैल्यू सिस्टम को साथ लेकर चल रहे हैं. लेकर वी चलते आर हैं. ट्राइंग वी आर ट्राइंग टू मर्ज द जनरेशन थॉट प्रोसेस, और and at the same time we are trying to question the biases, trying to beat up the discrimination, trying to provide opportunities. तो ये जब हम सब कर रहे हैं, if that is being a modern woman, I think those are the opportunities that which we should find ourselves पहले. Okay, and if at all you are in a space where you can create such opportunities, Opportunities, say, yeah. हाँ, you should definitely create it. तो उसके वजह से क्या, you're nurturing that growth process, the thought process, even in the younger generations. And wherever you feel that you have an idea that you can create, for creating that kind of a community, जैसे नैना जी कह रहे थे, जैसे सुनीता जी कह रहे थे, like creating a WhatsApp group, or running your own channels, you should try and initiate that. वो कहते हैं ना, एक आइडिया काफी है जिंदगी बदलने के लिए. जिंदगी बनाने के लिए. तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. नैना जी तो एंड सुनीता जी, आप दोनों ने, जैसे सुनीता जी ने वेब सीरीज में काम करी, आपने भी टीवी एंड फिल्म्स में काम किया है, नैना जी. तो ये मॉडर्न वुमेन का जो पिक्चराइजेशन किया गया है, हाउ गुड और बैड इज दैट, जो आजकल मॉडर्न वुमेन हम सिनेमा में देखते हैं? Let me correct you, Nidhi. I have not come in any TV show nor any web series. Yes, I had a very short film I acted in फिल्म एक्टेड, YouTube. या that's what I'm talking about. Short film. That role was very different from a modern woman. But जो दिखाते हैं modern women, I think I think films are glorified, right? All films are हाँ, glorified versions of real life. रियल लाइफ. Sadly, I will not take the name of a movie on this platform. एक मूवी में दिखाया है, वो वाइफ को कहता है मेरे जूते चाट, वो गलत है. I will go against that. That is not a modern woman. That is, I think, has never happened in Indian society. Should go against such depiction of a woman. अगर modern women है, glorified है, yes, but sometimes like I saw another web series where the modern women was shown reality, what is real. But all our movies are just glorified versions of our real life. I don't see any match between reality and the modern women they show on television. A modern women वहाँ दिखाते हैं बढ़िया है, वो 10 कमरों के बंगले में रहती है, मॉडर्न गैजेट्स.
सब टेंशन कुछ, है, हाँ। 10-10 नौकर उसको हेल्प कर रहे हैं। बट एक्चुअल हम्म, मूवी जो दिखाते हैं मॉडर्न वुमेन, जो हमारी पैरेलल सिनेमा दिखाती है, वो रियलिटी हाँ, दिखाते हैं वो औरत का, रियलिटी। वो रियलिटी दिखाते हैं। चाहे रियल लाइफ में दैट एक्ट्रेस may have not used that part in her life, but she portrays it लाइफ इन beautifully, the parallel ब्यूटीफुल cinema. But जो सिनेमा। पॉपुलर सिनेमा, आई एम सॉरी, दैट इज जस्ट, वो हम बचपन से देख रहे आ रहे हैं, इज जस्ट अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ व्हाट ग्लोरिफाइड रियली वर्जन, ऑल ग्लिट्स एंड ग्लैम्स, हाँ बिल्कुल। which is सुनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरी वेब सीरीज है वो हम एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को। मिशन जी, कंप्लीट में हमने गर्ल्स के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, उसको मैंने पॉजिटिव वे में हमने बनाया है, जिसमें कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनको मैंने कैसे पाला है। और एक मेरी है चाहत, जो अभी हमने कहा ना हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं और शादी के बाद पूरे नहीं होते, और जब पूरे बच्चे नहीं बड़े हुए होते हैं। हैं माँ के सपनों को पूरा कर रहे हैं। एक जी मेरा जी, था परिवार जो आया है, मेड्स जो हैं उनके ऊपर हमने मैसेज दिया है कि जो मेड्स हैं उनको कैसे रखना है। बिरसी नाम से वो मेरी सीरीज है। एक हमने गुरुद्वारे की अभी बनाई है। अभी मैंने आपने कहा ना पर्यावरण दिवस आया था, तो उस पे मुझे कविता लिखनी थी, तो मैंने पर्यावरण दिवस से कम मैंने ये लिखा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, उस पे लिखा था। वो लोगों को पसंद आई, उन्होंने मेरी उस कविता को यूट्यूब पे बनाकर डाला हुआ है। तो बहुत हमें ये, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ उसमें ये है कि मेरी जो भी कविता किसी को पसंद आती है, मेरे महाराष्ट्र में भी चल रही हैं, गुजरात में भी चल रही हैं, इधर आपके जयपुर साइड में भी, सब जगह जिसको जो पसंद आती है वो मेरे से परमिशन ले लेते हैं कि हम आपके यूट्यूब पे डाल दें, तो मैं कह देती हूँ डाल दो। बहुत सुंदर, तो बहुत ही उम्दा। हाँ, ऐसे हम गीतिका जी, जो एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछना चाह रहे हैं हम, क्या आप अपने और आसपास के बच्चों में वो वैल्यूज देखते हैं जो कभी आप में थी या आज भी हैं, ऐसी वैल्यूज जो हैं? ये प्रश्न का खैर ओपन फोरम में आप चारों में से कोई भी आंसर कर सकता है। क्या वो बच्चों में आप मैं देख वैल्यूज देख रहे हैं जो आप में थी कभी? मैं वैल्यूज देखती तो हैं, हूँ, मंदिर भी जाती वैल्यूज हूँ, तो हैं। मंदिर के बाहर बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको जी, हिंदी स्वर व्यंजन का ज्ञान देती हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जाती हूँ स्वर व्यंजन, और उनको अपनी तरफ से गिफ्ट्स देती हूँ जो बच्चे आंसर देते हैं। और बहुत मैंने बढ़िया। देखा जब हम उनको कुछ सीख तो बड़े प्यार से सीखते हैं। मैंने केजी के और नर्सरी के बच्चों को मैं भी देखा कि जब मैंने उनसे क्वेश्चन करे तो बहुत खुश होकर जवाब देते हैं। अगर हम उनको, मैंने आजकल जैसे नमस्ते का सिखाया, मेरा वीडियो भी डला हुआ है कि हमारी भारतीय संस्कृति में नमस्ते का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम इम्पोर्टेंट। हेलो हाय विदेशी है, तो चारों तरफ हाय हाय मच रही है हमारी। हम जब नमस्ते करते हैं पर्यावरण जी, वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है जो हमारे हार्ट पे आती है। हार्ट ही हमारा माइंड बहुत गीतिका जी, फ्रेश होता है। हाँ, गीतिका जी, पॉजिटिव, आपका क्या टेक है इस बारे में? क्या आप बच्चों को वो वैल्यूज देखती हैं आप उनमें? मैं हाँ देखती हूँ देखती हूँ, निधि, मैं उन भी हो देखती हूँ। सकता है कि उनका तरीका कहीं अलग हो, लेकिन जो जी, डीप रूटेड वैल्यूज हैं वो उनके अंदर हैं। और जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अपब्रिंगिंग हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द किड्स वैल्यू सिस्टम। सो अभी क्या है, पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर बिजी, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो दे बेटी डोंट वो हैव टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन। सो उस केस में हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने हिसाब से बड़े होते हैं, कुछ मेट्स के साथ बड़े हो रहे हैं, तो कहीं वैल्यू सिस्टम इधर उधर हो सकता है। बट मुझे हो नहीं सकता लगता है। कि अगर parents are giving enough attention, I'm not talking about time, I'm talking about just that quality time, वैल्यूज, quality attention, क्वालिटी। value add to their kids, value systems will remain। अगर हम ये claim कर रहे हैं कि हम में value है, तो हमारे बच्चों में ना हो, ऐसा होना बहुत ऐसे बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम में वो वैल्यूज हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चों में जरूर ट्रांसफर होती हैं पास और ऑन हो। बिल्कुल चली जाती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हमारी अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा चेंज आया है,
तो कहीं ना कहीं वैल्यूज जो ट्रांसफर होती हैं, जगह जगह से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो कल्चर सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी डिफरेंस आता है। सी बिल्कुल, दैट्स वैल्यूज का एब्सोल्युटली मतलब ये नहीं है वंडरफुल। कि आप वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप घूंघट निकाल के रह रहे हैं तो वो एक वैल्यू हो बिल्कुल गई। बिल्कुल। कोई हाँ, रिस्पेक्ट है, दैट इज नॉट वही रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट है। हाँ। अगर आप शॉर्ट्स भी पहन रहे हैं लेकिन आपके दिल में रिस्पेक्ट है, आपके मन में रिस्पेक्ट है, हम्म, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके मन में प्यार है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दिखाने वैल्यू सिस्टम दिखाया नहीं जा सकता, वैल्यू सिस्टम नहीं, सिर्फ वो आपके अंदर इम्बेडेड होते हैं। हाँ, इम्बेडेड होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज का सेशन बहुत ही कमाल का रहा एंड वी गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम सो मेनी ऑफ यू वंडरफul talented women who have been professionally so successful, and today you have actually added so much value to our conversation and depicting what a modern woman is. A modern woman is characterized by her adaptability, independence, and pursuit of diverse roles in society. She often embraces a broad spectrum of opportunities, balancing career aspirations, personal growth, and societal contributions. A modern woman challenges traditional norms, advocates for equality, and engages in a dynamic and evolving world while navigating complexities with resilience and authenticity. एंड आज की जो मॉडर्न वुमेन है, उसकी जो पिक्चर है समय समय से चेंज होती रहती है, एंड मॉडर्निज्म जो हम समझते हैं वो यहाँ है। मॉडर्निज्म इज a बिल्कुल। state of mind, and with each step वो बढ़ता रहता है, उभरता रहता है, नए रंगों में हमें दिखता रहता है। और आप सभी के साथ ये जो परिचर्चा हुई है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है एंड बहुत कुछ हम समझेंगे कि मॉडर्न वुमेन की जो अंदर भीतर एक कश्मकश होती है, उसकी प्रायोरिटीज कहाँ से वो सेट करती है, वो सब आपने अपने अपने नजरिया रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी ऑल थैंक यू फ्रॉम आवर लेट ऊर्जा टॉक इन एसोसिएशन विद नेशनल नेटवर्क की टीम की तरफ से हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आप अपने इंसाइट्स हमें देते रहिए, हमें इनलाइटन करते रहिए और मॉडर्न वुमेन की जो डेफिनेशन है उसको और भी सुंदर और ब्राइटन करते रहेंगे। Thank you so much for being here on our show, and I hope you enjoyed as much as we did. Thank you Yes, so definitely. much. Thank you. और Thank you मंच so पे much. थैंक आए यू हुए निधि। सभी गुणी थैंक लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और आपके विचार जानकर। हाँ जी, धन्यवाद। Thank you so थैंक much, man. Thank you so much. थैंक यू नेशनल विकास।